Good morning and Jai Hind students. So today we are going to study data handling once again, but we are going to study today bar graph. Now I will show you in the PPT and I will explain you that also, right? So now, what is bar graph? I have already informed you in the last class, but I will be explaining you again, right? So, but before that, you have to understand that we have completed our chapters. We have completed all the course. Data handling is the last chapter of your annual syllabus, and today we are completing this. Now, only and only enrichment activity is left of which chapter? Of fraction and data handling, which we are going to do tomorrow, right? So after that everything will be completed, and then I'm going to take your test. Okay, I'm going to take your test of fraction and data handling together. Be prepared for that, as I will be taking your test. So are you all ready? Yes. All right, so study more and more, and the question paper is of MCQ pattern, so you have to study according to that. Like there will be question and there will be 3 or 4 options. You have to correct the correct one, but you have to solve in your rough notebook. Okay, so this is your important terms which I wanted to clear you out. Now data handling, you will get this PDF and everything in the data handling folder in the EduNext app, and tomorrow which I'm going to do that enrichment activity also, that also you are going to get in this data handling chapter, right? So now let's start the topic. Okay, so now let's start. Now here in this you can see there is a bar graph. ठीक है, ये आपको एक बार ग्राफ दिख रहा है. Now what it is showing, अब ये बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या शो कर रहा है? Here you can see rank is given. Here is the rank. Now here is sample. Sample what? Dog and cat, fish, horse. There is a sample of this animal creatures or all these things. Basically I think it's a sample of that the household animals which we can see generally, एंड यहाँ पे उसकी रैंकिंग दी है. तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिया होगा, यहाँ पे कोई भी नंबर्स दिए होंगे एंड यहाँ पे कोई भी सैंपल या कुछ भी आपको मेंशन होगा. लाइक हियर डॉग इज ऑन 1, राइट? यू कैन सी रैंक 1, ant on rank 2, cat on rank 3, fish at rank 4 and horse at rank 5. सबकी एक एक रैंक दी है. ये मुझे 1 2 3 4 कैसे पता चला? बाय सीइंग दिस यू कैन सी कि ये किस लाइन पे आ रहा है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड बायोग्राफ, और इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है. ना अब इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछता है डॉग टेल मी द रैंक ऑफ डॉग, तो आप कैसे पता करोगे? ये 1 पे है तो इट इज द रैंक 1. Now who is on the 4th rank? So you can see 4th पे कौन है? Fish. So इस तरह से questions based पूछे जाते हैं, right? Next. Now see here also, this is also a data representation by the help of bar graph. यहाँ पे कलर्स दिए हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, पर्पल, इस टाइप के कलर्स है. ठीक है, यू कैन सी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स. नाउ हियर 0 2 4 6 8 10 12 14 16, और यहाँ पे क्या दिया है? नंबर समथिंग वट एवर इट इज रिप्रेजेंटिंग. सो नंबर्स यहाँ पे दिए हैं एंड दिस इज वॉट? कलर्स. यहाँ पे कलर्स दिए हैं. अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइक हाउ मच इज येलो. सो येलो आपका कहाँ पे आ रहा है? 6 और 8 के बीच में यहाँ पे आ रहा है ना, तो 6, दिस विल बी 7 पे है. सो इस तरह से हम डाटा में से क्या कर सकते हैं? हमारी जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स दे सकते हैं. नाउ आफ्टर नोइंग दिस you have to do 2 questions in the book of exercise 11.2, that is question A and question number B. I am showing you. This is your question number A, right? And this is your question number B, which you have to do in the book. And any one question, this will be easier for you. You can do this one in your notebook. ये आप question अपने notebook में कर सकते हो, but you have to complete in book also, right? So understand the topic and complete your work. That will be helpful for you, right? Now
After this, we will start exercise 11.2 question A. So are you ready? Very nice. So let's start the book work first. Okay, let's start. Alright, so today we are going to do exercise 11.2, but before that let's revise it. Now what is pictograph? You know this. The representation which is shown by the pictures is called pictograph. ठीक है, जिसमें आपको pictures मिलेंगी, that is pictograph. And the data which you get like this bar graph, it is called bar graph, right? यहाँ पे क्या data information हमें दूसरे तरीके से मिलती है, this is called bar graph. तो दो तरीके होते हैं, that is pictograph and bar graph, right? So before starting the question, I thought I should remind you this, and now let's start the questions. Our first question is exercise 11.2, that is on page number 171. So everyone take out your books, page number 171, write down the date, mention the classwork in the book, and now you have to write one question in the notebook also. Like you can write this question in the notebook. So क्या करना होगा आपको? As it is, कैसे करते हैं हम लोग? यहाँ पे first of all you will put the date, then you will write here exercise 11.2, then you will write question number A. Clear? So now this is question A. Study this bar graph which shows the mode of transport used by children to go to school. अब ये जो bar graph है वो क्या represent कर रहा है? The children which are going to school, कौन सा transport वो use करते हैं, ठीक है? So you can see here is bus. Mostly सबसे ज़्यादा बच्चे क्या use कर रहे हैं? Bus. Then car is also there. Cycle, on foot. On foot means जो पैदल आते हैं, ठीक है? तो बस, कार, साइकिल एंड फुट, ये सारे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है बाय दी चिल्ड्रन, दे यूज टू गो टू द स्कूल, ठीक है? जैसे आप सब आते हो स्कूल में, कोई बाई फुट आता है, कोई बस से आता है, कोई कार से आता है, कोई साइकिल से आता है, एंड कोई पेरेंट्स के साथ बाइक पे आते हैं. सो देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन लिखना होगा कॉपी में, ठीक है? आफ्टर दैट यू हैव टू मेक दिस डायग्राम, ये आपको बार ग्राफ बनाना होगा, एंड देन यू विल राइट क्वेश्चन नंबर 1, फिर आंसर, क्वेश्चन 2, फिर आंसर, क्वेश्चन 3, फिर आंसर, क्वेश्चन 4, फिर आंसर. सो यू हैव टू डू द वर्क लाइक दिस इन दी नोटबुक. क्लियर? आई एम शोइंग यू. यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखोगे, देन यहाँ पे ये डाटा आप बनाओगे, ठीक है? देन क्वेश्चन 1, फिर आंसर, क्वेश्चन 2, आंसर, क्वेश्चन 3, आंसर, लाइक दिस. It may takes your 1 page or it may takes your 2 pages, so doesn't matter. And after making the diagrams, you can color it like this also, right? So now let's start the first question. सबसे पहला question है, which is the most popular mode of transport? सबसे ज़्यादा popular कौन सा है? Popular means सबसे ज़्यादा कौन सा use हो रहा है? You can see here, ये by foot जो है 8 नंबर पे है, this is on 9 cycle, 4 पे क्या है कार, एंड 10 पे क्या है बस. तो दैट मीन्स सबसे ज्यादा कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा पॉपुलर है? बस. सो यू विल राइट हियर बस. नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉक टू गो टू स्कूल? कितने बच्चे वॉक करके स्कूल जा रहे हैं? यू कैन सी ऑन फुट कितने बच्चे हैं? हियर यू कैन सी हियर इट इज रिटन 8 नंबर ऑफ चिल्ड्रन. यहाँ पे क्या मेंशन है हमारे पास? नंबर ऑफ चिल्ड्रन. यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. सो हाउ मेनी आर गोइंग बाय फुट? दे आर 8. You can see here 8. Which mode of transport is least used? सबसे कम इसमें से कौन सा यूज हो रहा है? You can see the data and you can tell me directly सबसे कम कौन सा यूज हो रहा है? Yes, this is car. Now after this next question we have, how many students cycle to school? अब कितने बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं? Now you can see here is cycle and किस नंबर पे आ रहा है? 9 नंबर पे. So how many students cycle to school? 9 children, right? यहाँ पे क्या दे रहे हैं? नंबर ऑफ चिल्ड्रन. लाइक दिस इज 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक बॉक्स का मतलब यहाँ पे 1 चिल्ड्रन है, राइट? So we have done this question. So this one you can do in your notebook.
आप इस क्वेश्चन को नोटबुक में भी कर सकते हो एंड दिस इज योर बुक वर्क ऑल्सो, राइट? सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is on the next page, page 172. We have done this. एंड नोटबुक में कैसे करना है, आई हैव टोल्ड यू. सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, देन डाटा रिप्रेजेंट करना है. लाइक दिस यू विल मेक इट. ऐसे ड्रॉ करोगे आप. यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एंड यहाँ पे आप ऐसे शो करोगे डाटा. लाइक दिस इज बस, दिस इज कार, दिस इज योर साइकिल, देन ऑन फुट. सो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है एंड देन यू कैन कलर इट ऑल्सो, राइट? और यहाँ पे मेंशन करना होगा एज इट इज, जैसे बुक में दिया है, ठीक है? तो दिस इज कार, दिस इज ऑन फुट. सो जैसा लिखा होगा वैसे ही आपको सेम लिखना है. क्लियर? एंड यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स भी लिखने होंगे, ठीक है? ऑल राइट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बी क्वेश्चन. This paragraph shows the number of children who have visited various monuments. Study the paragraph and answer the question that follow. Now, what is monument? Monuments are the famous tourist places in which we used to go. जहाँ पे हम जाते घूमने और वहाँ पे पुराने जो monuments बने हुए, जो बहुत साल पहले से बने हुए हैं, हम उनको जब घूमने जाते हैं तो वो ज़रूर देखते हैं उस सिटी में. सो दीज आर फेमस मोन्यूमेंट लाइक रेड फोर्ट, विक्टोरिया मेमोरियल, ताजमहल, मीनाक्षी टेम्पल, गेटवे ऑफ इंडिया. ये सब क्या है? फेमस मॉन्यूमेंट्स जो जनरली विजिट करते हैं हम लोग, राइट? वेन एवर वी गो टू दैट प्लेस और दैट सिटी, राइट? नाउ ये जो नंबर है 1 2 3 4 से 10 तक, दिस मीन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चे गए, ठीक है? एंड दीज आर द नेम्स ऑफ द मॉन्यूमेंट. ओके, सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉन्यूमेंट इज विजिटेड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन? ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा मॉन्यूमेंट बच्चे देखने गए? विच मॉन्यूमेंट विजिटेड बाय द मोस्ट नंबर? मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा. यू कैन सी द मैक्सिमम. ये कहाँ पर आ रहा है? 7. ये कहाँ है? 9. दिस इज ऑन 8. यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये लाइन के थ्रू. दिस इज 9 एंड दिस इज 10. 10 इज गेटवे ऑफ इंडिया. तो सबसे ज़्यादा विजिट किसकी हुई? गेटवे ऑफ इंडिया. So here you will write Gateway of India. Gateway of India. Okay, next. Which monument is visited by the least number of children? सबसे कम कौन सा यूज हुआ है? कौन सा विजिट कम हुआ है? On 7 there is Red Fort. This is the minimum. So here you will write Red Fort. Now, how many children visited मीनाक्षी टेम्पल? मीनाक्षी टेम्पल कितने बच्चों ने देखा है? ये कहाँ तक आ रहा है? किस नंबर तक? 9. So what you will write here? 9. 9 children has visited मीनाक्षी टेम्पल. Okay. Now, how many children visited Taj Mahal? Taj Mahal is on which number? 8. So 8 students have visited, 8 children has visited Taj Mahal. Now, how many children visited the Taj Mahal and Victoria Mahal? सॉरी, विक्टोरिया मेमोरियल एंड ताजमहल, दोनों कितने बच्चे गए? सो 8 and 9. सो व्हाट यू हैव टू डू? ताजमहल इज ऑन 8 एंड विक्टोरिया मेमोरियल ऑन 9. सो वी हैव टू ऐड दिस 8 plus 9, that is 17. So how many visited? 17. Total overall 17. Clear? So you have to write down in the notebook. Question number B. आप एक कोई भी एक चूज कर लो, क्वेश्चन ए या बी. यू हैव टू डू इन द नोटबुक एनी वन. ओके, एंड डू दिस इन द कॉपी. कोई भी एक जो आपको इजी लगे, ठीक है? कोई एक कॉपी में करना है एंड ए एंड बी बोथ यू हैव टू डू इन द बुक. नाउ इफ यू वांट टू डू द प्रैक्टिस, स्टूडेंट्स, यू कैन डू the questions which are on the example. You can do the example questions or warm up question. It is there. warm up में भी एक question है, वहाँ पे तो डाटा बनाना है, but in the example number 2 and example number 4 you can do, or example 3 is also there in the book, so you can do all that question for the practice. Okay. So I hope that you have understood each and every topic of annual. Now what's our plan is, tomorrow we will be doing the enrichment activity of fraction and data handling in the book,
After that, in from the next week, we are going to do the test paper 2 in the book, then practice sheets, revision, and I will take one test of this chapter, right? Fraction and data handling. So don't think I'm not going to take the test. I will take the test on the Zoom app, and apart from that, we have to do the revision based on the chapters, and I will try to take all the revisions in the Zoom app so that we can connect each other, and कहाँ पे आपको mistake हो रही है, problem आ रही है, that we can discuss over there, right? So be ready, students. Now it's time for revision. It's time for your annual examination, right? And as you all know that school is going to open, so be excited and be happy, and you have to come to the school and we will meet together, right? So everybody do the test properly and give your test properly and give your annual exams also properly. Okay, bye bye, take care, have a nice day.